बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट मेजरमेंट्स। Why chapter number 1 is about measurements? In this chapter, we shall learn how measurements are taken and how measurements are recorded. What are physical quantities? What are their types? What are the units? How many system of units we use? What are the conventions for indicating units? What are the causes of errors or uncertainties in the measurements? What are the significant figures? What is the difference between the precision and accuracy? How uncertainties are assessed in the final results? What are the dimensions and what are the dimensions of the physical quantities? We shall learn these kind of things inshallah in this chapter. So first of all, let me define what is a measurement. Measurement is a comparison. What is a measurement? A comparison between an unknown quantity and a standard quantity of same kind is called a measurement. जब से इंसान इस दुनिया में आया है, इंसान ने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जाना है और इल्म हासिल किया है। इंसान की इस इब्तदाई तालीम को हम नाम देते हैं नेचुरल फ़िलॉसफ़ी का। नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। What is natural philosophy? The study of nature and the whole physical universe before the advent of modern science। आज की साइंस के आने से पहले जो हम अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में स्टडी किया करते थे, उस साइंस का नाम था नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। स्टडी ऑफ नेचर एंड द होल फिजिकल यूनिवर्स बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। नेचुरल फ़िलॉसफ़ी एक्चुअली नेचुरल फ़िलॉसफ़ी को हम प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं।
at the beginning of 19th century, the scientific knowledge increased tremendously, and it was found necessary to classify natural philosophy into two branches called biological science, number two, physical science. Biological science, the study of living things. The study of living things is called biological science. Examples: botany, zoology, microbiology, etc. बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. तो ये है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव फिजिकल साइंस, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स is called physical science. Examples: physics, chemistry, geology, astrology, etc. So we can see physics is a branch of physical science. Physics is an experimental science, and in an experiment the most important thing is a measurement. That is why chapter number 1 is about measurements. In chapter number 1 we shall learn how the measurements are taken and how they are recorded. Now we have frontiers of fundamental science. What are the main frontiers of fundamental science? There are three frontiers of fundamental science. Number 1, world of extremely large, mean that is universe itself. Today we know how the universe was formed. Today we know the Big Bang that was taken place 20 billion year ago, और किस तरह ये हमारी जो ज़मीन थी ये या जो अदर हमारा सोलर सिस्टम है या अदर प्लानट्स जो हैं वो किस तरह बने थे, ये आज हम ये बात जानते हैं, क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए हमने ऐसी जो है वो फायर लाइट हमने वो देखी है जो कि उस बिग बैंग का जो था वो एक काज बनी होगी एट दैट मोमेंट.
सो वी स्टडीड वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, और उसमें पूरी की पूरी यूनिवर्स आती है। मीन हमने यूनिवर्स किस तरह बनी थी, हमने इस बात की स्टडी की है। ऑन द अदर हैंड वी स्टडीड वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हमने प्रोटॉन्स के बारे में, हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में, हमने न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में हमने स्टडी किया है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनकी कितना चार्ज होता है, कितना मैस होता है, कितनी स्पिन होती है। प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो क्या होते हैं। एटम के अंदर पार्टिकल्स ना सिर्फ पार्टिकल्स बल्कि उनके चार्जेस, उनके मैसेस भी मालूम किए हैं। बल्कि आज हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये किन पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स, हमें आज उनका भी पता है, उनके विचार का पता है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? स्टडी ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स जस्ट लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। Thirdly, world of middle-sized things, world of middle-sized things, or world of complex matter, that is from molecule to earth। मीन हमने ना सिर्फ बड़ी चीज़ों को स्टडी किया है और छोटी चीज़ों को स्टडी किया है, बल्कि जो मिडिल साइज़ की थिंग्स है, मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक, हमने इन चीज़ों को भी साइंस में स्टडी की है। दैट्स ऑल।